अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग बच्चों के लिए एक स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं, मटन यखनी पुलाव। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, बहुत आसानी से आज हम लोग बनाने वाले हैं। चलिए देखते हैं नवाब्स किचन के स्टाइल में कैसे बनाते हैं। मटन यखनी का प्रोसेस शुरू करने के लिए पहले हम लोग मटन को अच्छी तरह बॉईल करेंगे। उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो देखेंगे। बॉईल गर्म हो गया है, इसी में हम लोग पहले पानी ऐड करेंगे। इसी पानी में हम लोग बे लीव्स के साथ साथ रॉ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, सिनेमन, क्लोव्स और कार्डमम। स्पाइसेस ऐड करे बाद हम लोग इसमें ड्राई रेड चिल्ली और ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग इसमें जिंजर और गार्लिक भी ऐड कर देंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ हम लोग इसमें कोरिएंडर सीड्स और फेनेल सीड्स भी ऐड करेंगे। मीट ऐड करने से पहले हम लोग इसमें स्लाइस्ड ऑनियंस भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें मटन ऐड करेंगे। मटन अच्छी तरह इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ बॉईल होने तक हम लोग इसको लिड क्लोज करके रखेंगे। मटन अच्छी तरह बॉईल हो के बाद हम लोग उसको मटन स्टॉक से मटन को अलग करे हैं। नेक्स्ट हम लोग मेन प्रोसेस शुरू करेंगे। बॉल गर्म हो गया है, इसी में हम लोग बटर ऐड करेंगे। बटर ऐड करते ही इमीडिएटली हम लोग इसमें ऑयल भी ऐड करेंगे। गरम गरम ऑयल में हम लोग इन सारे रॉ स्पाइसेस को डालेंगे, सिनेमन, कार्डमम और क्लोव्स। रॉ स्पाइसेस ऐड करे बाद हम लोग इसमें स्लाइस्ड ऑनियंस ऐड करेंगे।
ऑनियंस ब्राउनिश शेड में आते ही हम लोग इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ग्रीन पीस, पोटैटो, कैरेट, ग्रीन चिल्ली, टमाटोस, कैप्सिकम। वेजिटेबल्स अच्छी तरह बॉईल होते वक्त ही हम लोग इसमें कर्ड भी ऐड करेंगे। कर्ड के साथ साथ हम लोग इसमें टर्मरिक पाउडर और गरम मसाला भी ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ पहले ही बॉईल करा हुआ मटन इसमें ऐड करेंगे। मीट ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करे बाद हम लोग इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। मटन यखनी पुलाव और भी मज़े का बनाने के लिए हम लोग इसमें चॉप्ड कोरिएंडर भी ऐड करेंगे। इसी वक्त हम लोग इसमें मटन स्टॉक को ऐड करेंगे। अच्छी तरह बॉईल होते वक्त ही हम लोग इसमें 1 आवर तक सोक्ड बासमती राइस इसमें ऐड करेंगे।
नवाब्स किचन को जो सपोर्ट आज आप लोग कर रहे हैं उसके लिए सारा टीम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे nawabs_kitchen 786 पे फॉलो करिए और टीम को कांटेक्ट करने के लिए 786godfoods@gmail.com पर मेल करिए। तब तक के लिए सारा टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।